Hello friends, in this video we are going to discuss the part of the pharmacokinetics. So basically under the headings of the pharmacokinetics, there are four parameter terms, that is the absorption, disintegration, metabolism and the excretion. In our last lecture we have discussed the definition of the drugs, pharmacology and the basic introductory part. So yeah, in this lecture we are going to discuss the absorption of the drugs. So what is the absorption of the drugs? तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं हमको क्या समझ में आता है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना पड़ता है ताकि पर्टिकुलर टारगेट साइट में जाके एक्शन कर पाए। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एट द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। तो सपोज एक्स वाई जेड पर्सन ने टेबलेट नहीं तो पेरेंटल इंजेक्शन किसी भी फॉर्म डोजेज फॉर्म में ड्रग्स को लिया, तो ये अपना एक स्पेसिफिक रूट सिलेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद भी ये पर्टिकुलर स्पेशली टू फॉर्म में रहता है। एक अगर फ्री फॉर्म में रहेगा तो ये डायरेक्ट एक्शन शो करेगा, और नहीं तो अगर किसी भी प्रोटीन के साथ अगर एल्बुमिन और अदर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा ताकि वो फ्री भी बन सके और बाइंड फॉर्म में भी रह सकते। तो फ्री फॉर्म में रहेगा तो जब भी रिकॉर्ड होगा इट विल बी come into action and perform its own function. So now coming to the point, what are the factors that influence the absorption of the drugs in the body of an individual? तो क्या क्या होता है, पहले तो हमको एक पॉइंट देखने को मिलता है फार्माकोक्यूटिकल्स एंड सेकंड पॉइंट इज द ड्रग फैक्टर्स। Pharmaceutical factors will be dealing with the physical state, disintegration and the dissolution and the particle size. तो एक नंबर में देखते हैं हम फिजिकल स्टेट, दो नंबर में डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड द पार्टिकल साइज। तो फिजिकल स्टेट में देखिएगा क्या होता है, जितना भी ड्रग्स होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डोजेस फॉर्म में आता है, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में आएगा, नहीं तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर्म इज दे आर अवेलेबल फॉर टू बी यूज्ड। सो फिजिकल स्टेट में देखेंगे हम, सपोज कोई भी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड वाला डोजेस ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा देन सॉलिड। तो टेबलेट से ज्यादा, जैसे कि सिरप नहीं तो सस्पेंशन कुछ वगैरह हम लेते हैं मल्टीविटामिन, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो दूसरा पॉइंट में आता है डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज कोई भी ड्रग लिया, ये टेबलेट लिया, तो टेबलेट लिया तो ये सपोज स्टोमक या नहीं तो जेआईटी में जाता है। तो जेआईटी में जाके ये पहले छोटा 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 पार्ट में इसे टूटता है, तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी कुछ शायद टर्म डिफाइन होता है, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टाइम? It is the time taken for formulation, for the formulation, that means the drugs will be taken to break up into the smaller particles. तो टूटने में जितना टाइम लग रहा है बेसिकली उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम बोला गया है। और व्हाट इज डिसोल्यूशन टाइम? तो ड्रग्स जो टूटा है, मतलब छोटा छोटा पार्ट में टूटा है, एक सॉल्यूशन में आने में कितना टाइम ले रहा है? तो द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू गो इनटू द सॉल्यूशन। तो ड्रग्स टूट के छोटा छोटा पार्टिकल बना, डिसइंटीग्रेशन टाइम हुआ, तो वो पार्टिकल फिर से सॉल्यूशन में आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेगा डिसोल्यूशन टाइम। तो नाउ कमिंग टू द particle size. So here, as you all know that the smaller the size of the particle, there is a large surface area. So large surface area will promote the greater absorption. तो particle size जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा absorb भी होगा। So now coming on for second factor, that is the drug factor. तो drug factor में क्या क्या देंगे हम? Lipid solubility and the water solubility. The solubility of the what drugs is also a major criteria for its absorption.
and second one is pH and ionization. So more is lipid soluble. Suppose this is the membrane and this is the just. तो जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन जो है बाइफॉस्फोलेयर उसको लिपिड लेयर होता है उसमें ज्यादा क्रॉस कर पाएगा लेकिन जितना वाटर सोल्यूबल होगा तो उतना इसको रिपेल कर देगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा तो नाउ कमिंग टू what is the role of the pH and the ionization in case of the absorption of the drugs to pH. Suppose hmm, strongly acidic suppose strongly acidic heparin and extremely basic aminoglycosides. Extremely basic aminoglycosides usually remain unionized at all pH. Suppose किसी भी रेंज का pH हो तो ये जो एक्सट्रीमली एसिडिक हेपारिन और एक्सट्रीमली बेसिक अमीनो ग्लाइकोसाइड है ये मतलब आयनस फॉर्म में रहता है सपोज आयनस फॉर्म जैसे कि NH4 ये होता है अनआयनस फॉर्म लेकिन इसका आयनस फॉर्म होगा आपका NH3 पॉजिटिव अमोनियम ऐसा कुछ होता है तो एज वी ऑल नो दैट द आयनिक form of any drugs is least absorbable therefore these two drugs are absorbed less. On the other hand, the weakly acidic drugs like barbiturates are absorbed in the stomach, and the morphine, weakly basic, which is absorbed in the alkaline pH of the duodenum. तो क्या क्या आ गया है इधर weakly acidic drugs. Weakly acidic drugs जैसे कि barbiturate. So the barbiturate is a drug which is found under the category of the weak acid and it gets absorbed in stomach. And morphine is a drug. Morphine जो कि weak basic ये absorb होगा intestine में जो कि duodenum है duodenum तो ये इसका absorption intestine में है तो बेसिकली इधर क्या हुआ है पीएच एंड द आयनाइजेशन तो स्ट्रांगली एसिडिक में हम करते हैं एक हेपारिन हो गया और एक स्ट्रांगली बेसिक में हो गया एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स तो as these are the extremely acidic and the basic therefore it remain ionized at all pH तो ionized रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन but in case of the barbiturate and the morphine that are weak basic and weak acidic तो एसिडिक स्टमक में एसिडिक रहता है तो एसिडिक एसिडिक तो फेवर होके एब्जॉर्ब हो जाता है इसका एग्जांपल में एस्पारिन भी दे सकते हैं और मॉर्फिन वीकली बेसिक तो डोडिनम में पीएच बेसिक होता है एल्कालाइन होता है 7.8 अप्रोक्सीमेटली तो इधर इसमें इंडस्ट्री में आपका मॉर्फिन एब्जॉर्ब होता है तो in next point it is discussed that lipid soluble are well absorbed as compared to the water soluble that already have been discussed and ionized form of the drugs are less absorbed it is also discussed so
Now coming to the next part, here in the diagram, the disintegration of the drugs and the resolution of the drug is source. Resolution is also from here. And जो लिक्विड soluble है वो ज़्यादा absorb होता है वाटर soluble से और एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्पिरिन ये एब्जॉर्ब बेटर एब्जॉर्ब होता है और बेसिक ड्रग्स गेट आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम तो जो भी सपोज हमारा स्टमक में चलता है एसिडिक इससे एसिडिक चलता है ना तो ये मीडियम को एसिडिक बना देता है तो उस एसिडिक मीडियम में अगर हम बेसिक मेडिसिन ले लिया मतलब कुछ बेसिक ड्रग्स ले लिया तो वो बेसिक ड्रग्स आयनस फॉर्म में चला जाएगा तो अगर वो आयनस फॉर्म में चला जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा लेकिन जो वीक एसिडिक है एसिड एसिड कवर करेगा जैसे कि एस्पाइरिन उधर देखा हम क्या देखा द बार्बिटरेट these are also the weak acids and this favor the absorption because they doesn't they don't get converted into ions and remain neutral. Finally, the ionization of the drugs decreases its absorption. Now, in the third point, now coming to the biological factor. What are the biological factor? The surface area of the small intestine. As in the small intestine, there is a villi which is which increase the absorption of the drugs. Even the food item also. So, second one is the gastric emptying time. So what is gastric emptying time? So time required for all the content of the stomach to be descend into the lower part of the stomach, that is small intestine. तो उस टाइम भी एक मतलब ये टाइम भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैक एवोल्यूशन में तो प्रेजेंस ऑफ फूड नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड तो देयर आर सम ड्रग्स whose absorption especially or exclusively depending on the presence of the food in the stomach. Suppose one is rifampin and L-dopa. These two drugs absorption depend on the presence of the food. If there is food present in the stomach, then their absorption will definitely decrease. And in case of increase, one example is that lumefantrine, that is the anti-malarial drugs. Along with the fatty meal, it increases its absorption. तो अगर फैटी मील के साथ अगर लीमाफेंट्राइन को लिया जा सकता है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में देखा जाता है तो इन केस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंजेक्शन इफ कोई आदमी अगर दूध के साथ या कोई डेयरी प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ दवाई लेता है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन तो इंसुलेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसको एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा So now coming to the one of the most important topic that is the fast metabolism. So basically, what is the fast metabolism? हम किसी भी दवाई या मेडिसिन को लेते हैं सपोज ओरली लिया तो ओरली लेने के बाद ये स्टमक में जाएगा स्टमक से लिवर में जाएगा पोर्टल सिस्टम से और उधर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इस दौरान में अगर इस दौरान में अगर जाने के लिए जितना भी मतलब टाइम चाहिए उस टाइम में ड्रग्स में कुछ मतलब परिवर्तन चेंजेस आता है जैसे कि ड्रग्स मेटाबोलाइज भी हो सकता है और रिमूव और इनएक्टिवेटेड हो सकता है तो उसका एफिशिएंसी और बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करा देता है तो यही है बेसिकली हमारा फास्ट पास मेटाबॉलिज्म तो टू बाईपास और टू डिक्रीज द chances of the fast pass metabolism there is a bypass method so in bypass method what is done the drugs is either injected parenterally or from the pulling method or doses is increased slightly or moderately to cope the
रिक्वायर्ड डोज। सपोज पेशेंट को अगर 25 mm पर बॉडी वेट चाहिए, तो उसको 30 या 35 दिया जाएगा ताकि उसका रिक्वायर्ड डोज फिल अप हो आफ्टर फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। तो हियर द एडमिनिस्ट्रेटेड पेरेंटरली इंजेक्शन, तो डायरेक्ट अगर वेनस में इंजेक्शन दिया जाए तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बाईपास हो गया, तो उसमें ज्यादा इंक्रीज मतलब 100% बायोबिलिटी शो करेगा। एग्जाम्पल में लिग्नोकेन, जो कि आईवी में दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं अगर उसी ड्रग्स को मतलब ओरली दे रहा है, तो उसका डोज हाई करना पड़ेगा, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन में किया जाता है। So now coming to the next topic, that is the bioequivalent. So what is bioequivalent? Suppose there are two drugs. That means the two drugs preparations should have same active ingredient and same amount. That means to be bioequivalent, the two criteria should be followed. That is, one is the same active ingredient, मतलब active ingredient सेम रहना पड़ेगा और उसका amount या quantity सेम रहना पड़ेगा. Then they are chemically bioequivalent. और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ टू ड्रग्स इन सिमिलर इज सिमिलर, मतलब उसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी सेम होता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन होगा इसके अंदर में उसका बायोअवेलेबिलिटी ड्रग ए और बी का बायोअवेलेबिलिटी सेम होगा, तो उसी को ही मतलब बायोइक्विवेलेंट होगा। तो डिफरेंस इन बायोअवेलेबिलिटी कैन कॉज, तो डिफरेंस इन बायोअवेलेबिलिटी अगर सपोज ड्रग्स ए एंड बी, ड्रग्स ए एंड बी, इसका डिफरेंस अगर बायो अवेलेबिलिटी में अगर डिफरेंस हुआ तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक तो थेरापेटिक फेलर मिल सकते हैं, मतलब जो जिस गोल के लिए हम ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, मतलब इसका इंस्टेड दूसरा ड्रग्स को यूज कर रहे हैं ताकि सोच रहे हैं कि ये उसका बायो इक्विवेलेंट है, तो वो गोल अचीव नहीं होगा, दैट इज थेरापेटिकल यूज फेलर। और द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी, तो अगर उसी ड्रग्स में अगर बायोअवेलेबिलिटी मतलब इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर सही से प्रेजेंट नहीं है तो वो टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है। तो इतना ही है बायोअवेलेबिलिटी में। तो इन और नेक्स्ट लेक्चर और डिस्कशन विल बी डिस्कसिंग on the topic of the drug absorption and the bioavailability. So thank you guys for watching the lecture. So read out from books. I have tried my best to describe all the subtopics. So better to read from the book. I am just uploading the important topic here so that you can get what is important and what is not. I have heard from the seniors, so basically I am going to present the important topics here only. So thank you.